Students, today we will discuss the next topic of chapter surface chemistry, and this is the lecture number 15. The next topic that we will discuss today is gels. In this lecture we will study about what is the definition of gels, what is the meaning of gels. Then we will study about gelation. Gelation is the process of formation of gel. Then one of the property we will study about syneresis. Then we will study in the last types of gel on the basis of the elastic character. So I will start first with the definition of gels. Gels, these are the type of colloidal solution in which these are the colloidal solutions in which you have to remember one thing, that liquid dispersed in solid, very important beta, liquid dispersed in solid. What does it mean? It means the dispersed phase is liquid, whereas the dispersion medium is solid. So I'll again define, because definition is one of the important type. Gels are the colloidal solutions in which the liquid dispersed in solid, means the dispersed phase is liquid whereas the dispersion medium is solid. As far as examples are concerned, we are having the example just like starch. All of you have seen starch, gelatin, silica, gel. These are the common examples of gels. Now I'll explain this with the help of a diagram. See the diagram very carefully. The diagrammatic representation of gel. Diagrammatic representation of gels. Student, these are the solid particles 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Clear to all of you? And there exists a framework between them like that. एक framework बनता है इनके बीच में, and in between the framework the liquid is present, and these particles, these are basically solid. So this is the diagrammatic representation of your gels. Understand, these solid particles are these are black dots, these are the solid particles. What they will form? They will form a framework, and in the framework liquid is trapped in between them. So this we have done the definition example. Now we'll shift to the second topic, that is formation of gel or gelation. Just see out. The second topic is formation of gel. This is commonly said to be gelation. So what happens in the gelation? Just see out the students. These are the solid particles. Understand very carefully. So what will we do to form the gel? अगर हमें gel बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? We have to form a framework between the solid particle like this. This is a framework between the solid particles. So how the formation occurs? The gels are formed by the formation of framework between solid particles, okay, and inside this framework, clear to all of you, the liquid is present. Just way, what is present? Liquid is present. So I'll complete the definition. एक बार फिर से बता देता हूँ कि solid particles को आपस में combine करते हैं with the help of framework. Combination का मतलब क्या, कोई bonding नहीं है उनके बीच में, simply हमें एक framework बनाना है और उस framework के बीच में आपके जो liquid molecules हैं वो present होंगे. So complete definition is gels are formed by the formation of framework between the solid particles in which liquid is present. What is present? Liquid. So this is, you can say, the gelation or formation of gels. Now the second topic is clear for today's lecture. Now we'll shift to the third part, that is syneresis. Syneresis.
Now what is syneresis? Just understand, this is a gel. Normally I'll explain with the help of a diagram. This is a framework between the solid particles and there is a liquid between them. Now what happens beta? This is a gel now. If this gel is allowed to stand for some time, अगर हम थोड़ी देर के लिए जेल को रख दें, then what happens, ये लिक्विड जो है ये it will come outside of the gel like this. The liquid, I'll write here, the liquid comes outside the gel, leading to shrinkage of gel. This is said to be the syneresis. Clear to all of you? तो ये लिक्विड बेटा यहां से बाहर आएगा like this way, and when this liquid comes outside, diagrammatically what is present? Only a framework is present between the solid particles. This is now your shrinked gel. What is this? Shrinked gel, and this process is said to be the syneresis, and this is also said to be the, I have written, shrinkage of gel. सो बेटा बिल्कुल अंडरस्टैंड है, क्लियर है, इट्स अ नॉर्मल थिंग. लिख के इसको जेल को रखना है थोड़े टाइम के लिए, देन व्हाट हैपन, लिक्विड मॉलिक्यूल दे विल कम आउटसाइड. ठीक है, सो ओनली द सॉलिड पार्टिकल्स आर लेफ्ट विद देयर फ्रेमवर्क. दिस इज सेड टू बी द श्रिंकेज ऑफ जेल. सो दिस इज द थर्ड टॉपिक दैट वी हैव कंप्लीटेड. नाउ द लास्ट टॉपिक इज वी हैव टू डिफरेंशिएट और टाइप्स ऑफ जेल on the basis of elastic character. Types of gel on the basis of elastic character. So beta, on the basis of elastic character, the gels, these are normally of two types. Number one, elastic gels. Second, I will say non-elastic gels. Clear? So as far as the beta name indicate कर रहा है कि these are the gels which possess the elastic character, and these are the gels which does not possess elastic character. So first I'll simply write the definition. Elastic gels are the gels which possess elastic character, whereas non-elastic gels, these are the gels which does not possess elastic character. Now see the student, what is the meaning of elasticity here? ये हमें यहाँ पे understand करना पड़ेगा. The meaning of elasticity is very clear. This is the gel, and this gel contains two things: solid plus liquid. Understand very carefully. So if this gel undergo dehydration, क्या होगा बेटा इसका? Dehydration होगा. तो dehydration का meaning क्या होता है? That it loses the water molecules. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स कह लो, आप लिक्विड कह लो, वॉट एवर यू वांट टू से, बट नॉर्मली वाटर ही होता है. सो इट लूजेज द वाटर मॉलिक्यूल्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो द जेल, नाउ व्हाट इज लेफ्ट? ओनली सॉलिड पार्टिकल्स आर लेफ्ट, एंड वी विल से इट एज डिहाइड्रेटेड जेल. क्या कहेंगे इसको हम? डिहाइड्रेटेड जेल. फिर से समझिए, जेल में दो पार्ट्स होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड. उसका डिहाइड्रेशन हुआ तो उसने वाटर को लॉस किया. व्हाट इट फॉर्म्स? डिहाइड्रेटेड जेल. अब अगर इफ वी ऐड वाटर इन द डिहाइड्रेटेड जेल, it is converted into the normal gel, then this is said to be the elastic character. यहाँ elastic character का मतलब that particular elasticity से नहीं है. यहाँ meaning क्या है कि अगर आपके जेल का डिहाइड्रेशन हुआ, then उसने वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर दिया, it is converted into dehydrated gel, और फिर उसमें अगर आप दोबारा से वाटर ऐड करोगे, it will be converted into a gel. This is said to be the elastic character. Understand? Clear? So this is said to be the elastic character. वन लाइन में हम इसको कैसे लिखेंगे elastic character को?
gel once dehydrated undergoes hydration again to form gel. सो उसमें दोबारा से हाइड्रेशन होगा, जेल बनेगा. एंड एग्जाम्पल यहीं पर मैं आपको बताऊंगा. स्टार्च, सेकेंड जिलेटिन, अगर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थर्ड एग्जाम्पल इज अगर. नाउ लिसन बेटा, स्टार्च तो आप लोगों ने देखा होगा. नॉर्मली घर में जो हम विल यूज आटा यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ चपातीज, उस आटे का आपने बिहेवियर देख रखा है कि दैट इज अ जेल नॉर्मली. और अगर आप उसको रख दो तो उसमें से वाटर निकल जाएगा, इट इज सेड टू बी द डिहाइड्रेटेड. और दोबारा अगर उसमें वाटर ऐड करें तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द जेल. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यू कैन से इलास्टिक जेल्स. इलास्टिक करेक्टर क्लियर हो गया. अब नॉन इलास्टिक में क्या है? नॉन इलास्टिक में देयर इज अ डिफरेंट बिहेवियर. दे डज नॉट पजेस इलास्टिक करेक्टर. उनमें इलास्टिक करेक्टर नहीं होता. व्हाट डज इट मीन्स? सेम, ये आपका जेल है. दिस जेल वंस डिहाइड्रेटेड, इसका डिहाइड्रेशन हुआ, इट लूजेस द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट कन्वर्टेड इनटू डिहाइड्रेटेड जेल. नाउ इफ आई विल ऐड water molecules in the dehydrated gel, clear to all of you, this will not be converted into the gel जहां से हम चले थे. So on dehydration ध्यान करिए, ये सिर्फ क्या बचेगा यहां पे हमारे पास? On dehydration only solid mass is present. सॉलिड मास हमारे पास बचेगा. सो यहां पर आपको क्लियर कर दें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दे डज नॉट पजेस इलास्टिक करेक्टर. वी विल राइट वंस dehydrated they do not or does not undergo hydration. Example you have to remember silica gel. It is one of the common example जो घरों में हम यूज करते हैं बेसिकली. सो डेफिनेशन हमने किया. अब थोड़ा सा एक चीज मैं और कहूंगा कि ये जो इलास्टिक जेल और नॉन इलास्टिक जेल में क्या होता है कि ये आपका जो इलास्टिक जेल है इट पजेस द इलास्टिक करेक्टर. नॉन इलास्टिक जेल में इलास्टिक करेक्टर नहीं होता. तो नॉन इलास्टिक जेल को हम थोड़ा सा क्या कह सकते हैं? इट इज समवट हार्ड. ये आपको ध्यान रखना है. बट एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न, इलास्टिक जेल दे पजेस इलास्टिक करेक्टर, whereas नॉन इलास्टिक दे डू नॉट पजेस इलास्टिक करेक्टर. इलास्टिसिटी का मीनिंग आपको क्लियर हो गया. यहां पर भी क्लियर है, एग्जांपल्स आपको क्लियर है 1 2 3. वहां पर सिंगल एग्जांपल आपको करना है. नाउ द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, हम इसको यहां से हटाते हैं. विल डिस्कस द सेकंड पॉइंट. द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज सी आउट. सपोज दिस इज अ इलास्टिक जेल. Elastic gel. If this elastic gel is placed in water, these are you can say water. Elastic gel is placed in water, then I have to see what happens now. Clear? Same if non-elastic gel is placed in water, यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? We'll take non-elastic gel. You can take non-elastic gel. These are water molecules or simply this is water. Clear? So हम इसको स्फेरिका सर्कुलर भी शो कर सकते हैं. Doesn't make any difference. You can show these are water molecules. Doesn't make any difference. These are water molecules. Similarly यहां पर भी शो कर सकते हैं. We can show here. Now what happens? See out. Elastic gel absorb the water molecules just like. Absorb नहीं, I am saying absorb the water molecules means ये जो आपके water molecules हैं ये इसकी body में अंदर enter करेंगे just like that. So elastic gel, what happens? It elastic gel when placed in water absorb water molecules. And this property is said to be imbibition. What is this? Imbibition. But as far as non-elastic gels, then these non-elastic gels, they do not absorb
वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर इसके अंदर एंटर नहीं करेंगे। क्लियर? सो वी कैन से दैट दे डज नॉट शो imbibition. So beta, we have discussed three major points. First we have discussed the definition, elastic character, non-elastic character. Then we have discussed what is the meaning of elastic, non-elastic character. Then we have discussed that elastic gel, they will show the imbibition, whereas non-elastic gels, they do not show imbibition. And lastly, in the second number, we have discussed the examples also. In the elastic gel, the examples we have learnt starch, gelatin, agar-agar, and in non-elastic gel there is an example said to be the silica gel. So beta, today we have completed our topic gel, in which we have studied the definition of the gel, then gelation, synersis, and in the last we have done the types of gel on the basis of elastic character. So student, this is all about the lecture. That's all.